मैं भी आज ठीक है so जो whoever have installed R, do you have these four consoles right now if you open R Studio? Yes, sir. Okay, so see, first I won't start as कि हाँ ये इसको ये बोलते हैं उसको वो बोलते हैं, this is that so that basic I won't even start because that is not needed that much. So I'll strictly restrict this for whatever is needed for a meta-analysis. And just a minute, let me join from mobile also. Otherwise, it's very difficult to see what is happening. Just a minute. So do one thing in this console, that is your left lower quadrant. That box is called console. So do you have that cursor coming there? Yes, sir. Recording in progress. Just write there. So just write there library. Just write library. Are you getting these three pop-up prompts? Yes, sir. Okay, that means अरे यार अरे रुक जाओ. That means your R is properly installed. So if you are getting the prompt, that means your R is working well. Whoever is not, anyone is there who is not getting this pop-up prompts? Running, sir. हाँ बताओ. Sir, I have submission actually. Basically, I am a slow learner. So today I have for myself decided that I would be learning this first and would be doing it then. So please Yeah, pardon sure. me. I won't be. I mean, yes, sir. I just I wanted have to confirm. no issues, sir. Yeah, yes. I have ample of time, so no issues at all. Thanks. So when you write library, are you getting these three pop-up prompts? Like three things will come, three commands will come: library.dynam and library.dynam.unload. Yes, sir. Okay, others? Yes, sir. Everyone, please. So just you can write on the chat box also, or I'll just call up names. Otherwise, for someone, if it is not coming, then R is not installed properly. So the whole thing will waste. Deepa, is it coming for you? Yes, sir. Madhushmita, Yes, sir. Mahesh sir, or Shamiksha? Yes, sir. Okay. Okay, so we will start then. See, the left lower quadrant is called console. So this is where R does its job, the background job. The left upper quadrant, there are three things. So one thing here, if you import a data frame, that will come here, number one. Number two, the project you are currently working on, that will show here. And number three is script. Right now I have this R script showing here. So script is something like in SPSS or in Stata, you can write a script and save it for using it later. So it is the same for R also. So R script you can write here. I'll show how to write and everything. The upper right quadrant where it is written environment, history, connections, and tutorial. So this is something which is
called R environment means whatever you will do, the calculations, the outcome of the calculation will come in the environment. So if you run an equation, run a code or something, that will run on the background job console, that is the left lower quadrant, and the outcome will show on the diagonally opposite quadrant, which is right upper quadrant. Here also you will get options like dataset import, and there is one memory button. So R has a total of, I guess, 500 MIB memories. So that is completely okay for our regular job. And right now, I guess R can take up to 10 lakh variables at a time. So all is so any kind of analysis is sorted. And the lower quadrant, right lower quadrant, where it is written files, plots, packages, help, viewer, and presentation. So this is the most beautiful thing about R. Under plot, if you are doing some plot, if you are instructing R to make some plot, that plot will come here. Then the packages, if you see, if I click on the packages, so whatever packages that I have in my library will come here listed. Like you can see, my first package is ABind. So that is for multidimensional analysis. The next is ANOVA Shiny. That is to make nice ANOVA plots. Then rest of the packages are there, which I have in my R Studio. There are some default packages also which will automatically come here. Then help. So one nice thing about R is you can get everything. You don't have to remember any code. People tell R is very difficult and everything. Yes, it is difficult, but help is available. R Studio and R Desktop is a dynamic community. If you can go to POSIT website, you will see there is a book called Arc Book Markdown. So you will get every possible help there. And even if you are not sure about some code, then you can write the code. Suppose I want to know about the code metaprop. So you can just write the code metaprop here in the help portion. So see, here is coming metaprop. So just enter. I already have metaprop open. So this one you go, and everything about the code it will show here. So how to construct the code, what are the each elements of the code, everything is here. So these are arguments that are used for the code. So these are the structure of the codes. I'll come to all these. So basically what I am saying is every kind of tutorial, every kind of help is available within R. And another thing is like, why you don't have to remember R codes? Because suppose I want to work with the package command metaprop. So if you write metaprop in the console, okay, no. So let me do it from first. Okay, so first of all, RStudio is a cloud-based software. So softwares like SPSS and Stata have their packages, their equations all installed inbuilt in them. But R is very lightweight. That way you will see R will open much faster than other programs. So R inherently doesn't have these packages, these statistical packages installed in them. So whatever you want to do, that particular package you have to install in R. So there are two ways to install packages in R. So for today's session, for just exclusively for proportional meta-analysis or any meta-analysis that can we need three packages. Number one is meta, number two is metaphor, and number three is tidyverse. Meta package is like you can say it's a standalone package for any kind of meta-analysis. So how to install that? So just do with me. So there are two options for installation. Either you can write here. Acha, can you see the my screen? Like I'll be writing now. Is it much better visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So suppose I want to install some packages. So how to do that? There are two ways. Number one, so just write. So R is very intuitive. So what you want to do, you have to write. Simple.
So I want to install packages. So I have to write command as install. The moment you write install, automatically these things will come. So two pop-ups are there. Are you all getting these two pop-ups? Yes, sir. Okay, so one is install packages, another is installed packages. So you don't want installed packages, we want to install something new. So the first one we'll just enter. Till this it's done. Yes, sir. Okay, so now just put inverted commas, single inverted comma. Just put one single inverted comma and write meta. Are you done till this? Are you all done till this? Tell me. Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Archana, Deepa, Anisha, Nagma, Madhushmita, Mahesh, Yes, sir. Amisha. Yes, sir. Done, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so put your cursor at the end of the sentence and just click enter. Are you done? So ultimately you will get this writing package meta successfully unpacked or something whatever it is, it will write. Have you got the same thing? Yes, sir. Done. Okay. Everyone? No, sir. Okay. Tell me some problem is there or Our tool is required to build our package, but is not currently installed. that's fine. No issues. You come down, Okay. come to the next line, come to the end. A version of this package for your version of R might be available elsewhere. That's okay. Come down एकदम end में. What is the last line written? Uh, Perhaps you meant meta? Question mark. Meta only. What did you write? Sir, I have only write meta. Did you put the inverted commas? Yes, sir. Have you exactly wrote this one? This one, install dot packages in bracket meta, META. Sir, M capital. I have written. So R is very particular about these capitals and all. So Okay. whenever you are writing in R, so just stick to small letters. Okay, sir. Then again, I have to install the packages. Just write install packages, then in bracket meta within inverted comma, within single inverted comma, then put the cursor at the end of the command and install. Click enter. Okay, sir. Has it come? Yes, sir. Okay, so this is one way. The next package I told is Metaphor. Metaphor we will install in another way. So how to do that? You go to the right lower quadrant. It is written one option is there, packages. Click there. Then you will find these two options. Just beside this green option update, there is one option called install. Click that. Then keep as it is. Installation
source, R has two installation source. One is called repository of CRAN. CRAN is that website from where you downloaded the basic R statistical software. And another is your own archive file. You can supply your own file also. Anyway, we will keep it as repository. Then packages that you want to install. Here you write metaphor. The moment you start writing, in the drop down, you will get the package you want. The first one, metaphor, you click. Till this, everyone has completed. Yes, sir. Then check where R is installing this. Have you all installed R in your C drive, in your matlab main drive? Whichever is your main drive, mine is C drive, where the operating system is also installed. Have you all done the same, or are you using some other drive? Mine is library. I did not hear you, sorry. I don't have C drive. That's okay. What is written there? Resources/library. Okay, so you have installed it in your library. If you open your computer, if you open your My Computer, then you go to your home. Sir, Is I it don't is have it a MacBook or what? MacBook, sir. Then I don't know. Then it's okay, fine, whatever it is. Okay, sir. Okay, so now install just, and always check this install dependency option. So because if one package may have many other sub packages that it needs, so if you don't click this, so what will happen when you work with that particular package, something may go wrong because of the required packages are not there. So always check this install dependencies, then just install. Okay, so everyone tell, have you got the same thing? Package metaphor Yes, sir. successfully unpacked. Yes, sir. Everyone? सर मेरा ये वाला जो प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है, पर जो द डाउनलोडेड बाइनरी पैकेजेस आर इन दिस पाथ ये आ रहा है। पर ये- That's fine. ये आप वो मैकबुक वाले हो क्या? हाँ, हाँ, तो कोई बात नहीं, हो गया ना, वो लिख रहा है ना कि डाउनलोडेड बाइनरी पैकेजेस आर इन, बोल के एक मतलब ये दे रहा है ना. yes, sir. हाँ, then it's done, no issues. Everyone same? Yes, sir. Mahesh sir, Atul Jena, Nagma, everyone done, right? Yes, sir. Okay. Okay, so just install last package. I already have these packages, so I won't be installing the next one. The next one is Tidyverse. Install the package Tidyverse. It's Tidyverse, Tidyverse. So Tidyverse, as the name suggests, Tidyverse means it makes the plots beautiful. So it does work in a much tidier way. So that is why they kept the name Tidyverse. So install the package Tidyverse. Sir, tidy? Verse. I'm writing Tidyverse, Tidyverse. Done, sir. Okay. And whoever has installed R, please check, whoever is using Windows laptop, that R should be installed in the same drive in which you have your operating system. That is in most cases C drive. That can be any other, with any other characters also. And ensure that your drive has adequate space.
If not, you can install in other drives also, because whatever you do in R, it will be saved in that particular location only. So don't change the location. Let R do it automatically for you. So all are done with these packages. Yes, sir. Okay. So next step is I'll tell you about R script. So see at the top right एकदम extreme left में ऊपर left top में ये plus button है, this green plus button where Yes, my sir. cursor is right now. So that is called R script. So just click there. So first one is coming R script. Yes, sir. So you can just click there. One empty script will open up in the upper left quadrant. Yes, sir. So this is where you can write your codes and save it and use in multiple time. So what happens now in the console also you can write this code, like the same thing install packages I wrote now, the same thing I could have written here. So the usefulness of this is just a minute. So the usefulness of this is in the console, if you are writing anything, once you are done with the writing and you clicked enter, so you have done something wrong, you cannot go back and correct it. You have to write it again. But if you would have written here, then you could have corrected it. Like here I have written install package. Suppose I write it like install one with some spelling mistake, and then I click run. So run is this one. See that my cursor is on this left arrow, green left arrow. Can you see? So Yes, sir. once you have completed your command writing, you can click this green arrow and automatically it will run. So I did a mistake. So there was an error. But now if you are writing in the console, you cannot go back and correct it. But if you are writing in the script, you can simply fix it here. So again, you can run and it will automatically do the job. It is useful if you are doing same kind of work. So better to save your script, and simple how to save it. Once suppose this is the script you have written, you want to save it. You go to files, ekdam top left corner, files option is there. You go to files and you click this save as, and it's similar wherever you want to save it. You can do that, number one. Number two, you can just save the script. This floppy disk option is there in the upper left quadrant. Can you all see Yes. the floppy disk option? Yes, sir. So there also you can click and save it in your desired location. Okay. Okay. So now next thing is, once you have uploaded or installed the packages that you want in R, but one thing is R, though it downloads the packages, but whenever you want to do the analysis, you have to call up those packages. So you have to instruct R कि भाई वो पैकेज से मुझे काम करना है, वो पैकेज मुझे यहाँ पे चाहिए. So simply, so it's like you have suppose 100 packages installed. So R keep them in a library. So whenever you want to do some job, you have to loan that particular book, that particular package from that library and then start working. So to do that, what you have to do is simply, these are the three install packages I was saying. So it is done up to this. Then is loading the packages. Just write library meta, library metaphor, library tidyverse in separate lines. How to write in separate lines? So just write like this, library meta, then click shift and enter at once. If you don't do that, if you just put enter, then it will directly run the command. So always write with
If you want to go to the next line, click shift and enter along with both together. So see, whenever you are writing it, R automatically shows you what packages you have available. Do the same with me. Till this completed. Yes, sir. Till this done. Have you written till this, Yes, everyone? sir. Others? Shamiksha, Mahesh sir, Madhushmita, Atul, Deepa, everyone? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. just click enter then. Oh, library spelling I have written wrong. So are you guys done with this step? All three packages are it loaded? Similar thing is coming. See. Yes, sir. You don't have to understand anything in it. It is R's job. Whatever it is doing, let it do. Let it do. So Yes, you sir. just see all the packages are installed or not. So your job is successfully done. How to know? Either it will show simply it will write it did not work, or the next cursor won't come. See, like for the library meta, loading required packages, then loading the metaphor package, everything is done. Then this warning message, don't bother about it because R has updated its version. I have a updated version, but the meta package is metaphor. These packages itself are not updated because these are packages that are built by some people. So who are doing the meta analysis. So they built it in particular version and they have not updated it yet. So that's why this message is coming, but that doesn't matter. Irrespective of the package version, it will work. And then the library tidyverse. So all are done, right? Please tell. कहीं पे Yes. कहीं पे कोई अगर अटक गया है प्लीज बता दो बताओ. Yes. Okay. All are done, right? All are completed, right? Yes, sir. Okay. So now we will be importing the data sheet. And before that, I will tell you regarding how to create the data sheet for proportional meta-analysis in R. The data sheet, I guess I already shared this one, day 2 data frame for RStudio. Did I share this or should I do that again? Do you all have this data sheet? Sir. Yes, sir. ओके तो इसको थोड़ा ओपन कर लो एक्सेल शीट को.
And R accept any data. So R accept Excel also, R accept CSV also, R can directly get SAS file also, and any file type available there, R can import that. So R is like a open source, uh, open crowdsource platform. So whenever someone faces a problem, he or she puts it in the R community and they come up with a solution. So every human problem till date has some solution, some packages in RStudio. So that is one thing beautiful about R. So have you all opened this data sheet? Yes, sir. Okay, so see, R has some particularity about the variable names. So it's like, suppose the variable name event rate or the proportion is called P. So R knows it as P only. If you put any other name here, you have to tell R P is equals to some other variable name. So it's always better whenever you are creating your data sheet, please maintain this particular setup. Not for the subgroup can be different data names, but the basic data which R requires, like the sample size, capital N, and the event rate, how many events have occurred, small n, and P is the proportion, then standard error AC. So these four you should keep same. You can change, but that just creates more problem in R. You have to designate these variables as this particular names again. So better to just keep this particular four names whenever you are crafting a creating a data sheet. And this study also start with a capital S and rest can be in small letter. So these five you should keep the same. Okay, so come back in RStudio. Another thing is R needs for proportional meta-analysis, R needs those columns. R needs standard error, R needs upper confidence interval and lower confidence interval. I showed how to do calculate that. If you have the basic data, you can simply calculate and prepare the data sheet like that. And subgroup, n number of subgroup you can put there. That's not a problem. And R accepts not only the binary data, it accepts string data also. Like you must have seen for these subgroups like gender, study zone, I did not code them. So it's not necessary to code them. Like south zone is equal to 1, southwest zone is equal to 2. It is not necessary to code these into binary variables or categorical variables, numerical categorical variables. It is fine in R. R takes everything. So that is not a problem. Okay, so come back to RStudio. Now you want to import your data. You want to start your analysis. So importing is pretty easy. There are codes also for importing, but that is much hectic. So rather you simply come here in files, top left quadrant, top left extreme corner files. Then in between somewhere you will find this import dataset option. Then this pop-up will come from what kind of data you want to import. Oh, sorry. So it can be textual data, it can be Excel data, it can be SPSS data, Stata data, or SAS data, anything. We want to import Excel data. So you will just simply click Excel, import from Excel. So this pop-up will come. Till this, everyone has got. Yes, sir. Some may not get this because some may not have the required package, which is called Read Excel. So if you are facing any warning sign, please tell me.
सबका हो गया इस तक, ये तक आ गया यहाँ तक? हाँ जी सर। जी जी। Okay, so then obviously it is asking your file URL. So if you don't know the file URL, obviously who have the file URL, you just click browse, and then from the particular space where you have saved the data, you go there and access the data and open it. Done. Yes sir. Has the data sheet come here? Data preview, in the data preview, Yes sir. everyone? Yes. Now. See, I was telling you, R automatically recognizes what kind of data you are giving him or her, whatever. So see, character data also it automatically recognizes. The string data also it automatically recognizes. It has what to say, ये इसको डबल लिखा है क्योंकि it recognizes these cells as both character and string, because we had formulas here and we did not change that, so that is why it is taking like that, but that is not a problem. R is R has no issue what you feed him, so it will take anything. Acha, come down. Here in import options, you will see the name of the file. Then here you will see first row as names. It would be automatically checked. If it is not, please check it, because first rows are the variable. Then sheet, under the option sheet, there will come one drop down. So whichever sheet you want to analyze, that you have to mention. So here we have only one sheet, so by default it is coming. Otherwise, if you have other sheets also, it would have come here. You could have selected that particular sheet you want to do analysis. So then just import. See, here it is written reading Excel file using read Excel. So this is the package it works on. And this is the code in the right side. Here, this is the code that it is using. So if someone wants to write all this, that also he or she can do. Otherwise, just click or run is better. So just import. See, on the upper right quadrant, the data sheet will come. Yes, sir. Okay, has it come for everyone? Yes, sir. Okay, see, this is the code it worked on. So library, it has called upon the library called read Excel. Then it is instructing R to read that Excel sheet. So the codes are very easy. See, like whatever you want to do in your mind, it is written the same. So it is just saying read Excel. Which Excel? The Excel file name. Bas, that's all. Then it is showing I want to see. So view that Excel file. Simple. So nothing too much is there. So whatever you want to do, you will have to write that. Okay, till this, anyone has any problem? All done, right? Yes, sir. Okay, so now directly come to the meta-analysis. So we have the same data. We have our sample size. We have our event rate, or how many events has occurred. We have the proportions. We have the standard error and confidence intervals. So now you want to do a proportional meta-analysis or pooled prevalence meta-analysis. So for that, the command is metaprop. So for proportion, the command is meta and prop. It's simple. So what you have to do, you have to
designate a person. So another thing in R is, suppose you have to write a code for some analysis. Then after writing the whole code, you have to instruct R saying that like it's like नामकरण करना. तो कोई analysis किए हो तो you have to tell R कि this analysis is called Ronic. So you can simply write meta analysis meta. So you can simply write meta analysis. Just a minute. Meta analysis. Now you have to designate the name. तो नामकरण करना होगा कैसे? By typing this particular thing. One bracket, one less than sign, then one hyphen. So this is how designate something to R. So the left side, whatever you write, R will think it is designated as whatever is written in the whatever is written in the R side, right hand side, R will think is designated by whatever is written in the left hand side. So now whatever I will write here will be designated as meta-analysis. Okay, so please start with your code. So just write metaprop. Just a minute, I'll just reload my R. Yes, sir. This is another way to load the library. In the right quadrant, right lower quadrant, all the libraries that you have, it will come. So it's like books you have in your library. So you just go to that particular one and click this, but uncheck this. It will check this. It will automatically load the library. Okay, so start. First of all, designate करो कोई भी कुछ भी. Meta analysis of proportion, suppose of proportion. Now designate with less than sign hyphen. Then start your code. So the code is metaprop. So now whenever you start writing, R will have this pop up and say in your right, this big yellow screen is coming. Here is the complete guide for the code is available. So whatever you need to write there is given in this particular setup. Anyway, so you start with your code. I'll explain the code in somewhere in Word file maybe. Then that will be better. You can all see the code, right? Yes, sir. Okay. So first of all, whenever you write a command prompt, command for a code, which is metaprop, then after that, there are something that R wants from you.
So if you are doing an analysis and you have already supplied a data frame, so R wants the options, R wants what you want to know. So regarding that, what all is available already in that data frame. So for a proportional meta-analysis, what you need to supply? Number one is the event. So how many events has occurred? So what is that? That is n, small n in our data frame. So you simply write small n. Then R wants to know out of that, it's like out of what that n is occurring. So what is the overall sample size? So simply write capital N. So that was in our data frame. Capital N is the sample size. So these are already designated, right, in the data frame. Suppose in the data frame, instead of this capital N, you write maybe sample size. Then you would have to do this. N is equals to, in an inverted comma, the data frame, a dollar sign, and then you have to write the variable name. So this is much cumbersome. So rather it's better to just write your variable name as capital N. Anyway, so the main thing n and small n you have already supplied. Then what you need for the forest plot or for the analysis, you need the study details. So that command is called stud lab. So you have to write stud lab. Now R is asking where is the stud lab? Stud lab means study label. So stud lab is there in our data frame under the variable name study. So simply write that study. Then SM. SM is how are you going to give your proportions. So proportions को raw proportions देना है या फिर arcsine transform proportion supply करना है या फिर log transform proportion supply करना है. That is what it is asking for. SM, the most probably the full form. Just wait, I'll tell you. Just go to help and type metaprop. Most probably SM is summary measure, but let me just check. Yeah, see, the first one is event. So number of events, that is the small n. Sorry, event is n, that is your whole sample size. Then small n is the number of observations. So how many event has occurred. Then stud lab, it is an optional vector with study labels. That is your variable name study in our case. Data is the data frame. SM we have to find. SM is a character string indicating which summary measure is to be used. Yeah, SM means summary measure. So I was saying that day, if you are working with proportions, proportions are generally considered not stable. So in finite equations, it is always better to supply proportion as some kind of transformation. So that transformation can be simple log transformation, that can be p log it transformation, that can be PAS. PAS means positive arcsine transformation. So we will use positive arcsine transformation. And if you at all want to supply as raw proportion, then you have to write PRAW. So just remember it now. This is some technicalities you need there. So you supply your summary measure as PAS. So R will automatically transform it into arcsine transform proportion. The same you can do in Excel also. In Excel, if you want to transform any particular number or proportion into arcsine transform proportion, then you have to use equals to, then the command is assign, that is called arcsine number. So arcsine is simply, suppose you have a data or you have a numerical data 0.8 or something. So arcsine kind of scale it in between minus pi by 2 to positive pi by 2. So it fixes a range. So in this range, it is called, generally any numbers are most stable. So it is like rescaling your data.
or kind of standardizing your data into a particular scale, particular frame. So you can simply assign, then you can give your number or the cell which you want to transform, and it will give you, there should be a cell. So suppose here it is written 4, and here you have to write 4. Still it's not coming. Wait. Number assign. Zero point. Oh, sorry, I forgot. Assign is, you have to provide first log transformed number, and then assign will transform it into arcsign transformed numbers. Anyway, forget all these things. This is not required. Just remember, whenever you are supplying proportions, you should not supply a raw proportion. That's all. And assign transformation is any log transformed numbers. If you provide assign transformation or arcsign transformation, transforms it into a scale between minus pi by 2 up to the range of pi by 2. Anyway, forget it. So in your SM summary measure, you have to write PAS, and R is good in that it does its calculations using the transformed proportion, but when it is the time to give you the outcome or the end result, it automatically back transforms it. So it's not like that कि आपने arcsign transform या कोई और transformation use किया है तो it will provide you the transformed proportion ultimately. It's not that. It will back transform it when you have when it has to give you the result. So you are sorted in that. Just remember to type PAS, positive arcsign transformation. So now R will ask you about the data frame. So you simply have to write data is equal to the name of the data frame. This also you don't have to write by your hand in your hand. In day, the whole thing will come as a pop-up, and you can just simply click that. Then R is asking the method, which method it will use to assign weight. So yesterday we are saying the assigning weight in proportional meta-analysis is through which method? Inverse variance. So you simply have to write inverse. There are many methods. Like if you go to R and then you go to this help metaprop methods. So there are two main methods. One is GLMM and one is inverse. So in this case, we'll be using the inverse variance method. Then method dot tau. So this is another technicality. R is asking you to calculate tau square, what method it will use. So just remember, you have to write REML, which is called restricted maximum likelihood. Don't have to know what it is and what all. Generally, by default, R has some method. If you don't write it also, R will automatically use some particular method. But in case of proportional analysis, we should write this. In case of other meta-analysis, R automatically adjusts it. But in case of this particular prevalence meta-analysis, just remember to write this method the tau, that is how to calculate the tau square value. The method is REML, restricted maximum likelihood. Then the next code is P scale. P scale is equal to 100. Can anyone say what is P scale? What does a P scale do? Just मतलब थोड़ा ही करो, सोचो कि P scale equal to 100 मतलब क्या हो सकता है? Anyone? कोई भी? It's talking about a scale. So that means it wants us to scale the data. तो equals to 100 लिखा है मतलब क्या है? कोई है या सो गए सब? है सर।
तो थोड़ा सोचो। Already actually. हाँ, how was the data sheet? Was it in fraction or was it in percentage scale? Was it in 100 scale? In the data frame we built, how was the proportion? Is it in fraction? Is it like 0.49 or is it like 49%? Yes, sir. Percentage. Huh, but how is it written? Is it written like 0.49, right? Yes, sir. So now if we don't write p scale is equal to 100, it will simply give us as fractionals only. So if our pooled estimate is 24%, if we don't write p scale equal to 100, it will give us 0.24. Just that. So we are telling R कि भाई इसको scale करो in 1 to 100. So simply it will scale the data or it will multiply the fractions into 100 scale. Does that. So उस पे कुछ है ही नहीं. तो सेकंड लास्ट जो कमांड है, ये तुम लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो. इफ यू राइट एज कॉमन इज इक्वल टू फॉल्स, दैट मीन्स यू आर इंस्ट्रक्टिंग आर कि मुझे कॉमन और फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल नहीं चाहिए. अदरवाइज इफ यू डोंट राइट, आर बाय डिफॉल्ट गिव्स यू बोथ, रैंडम भी देता है, फिक्स्ड इफेक्ट, बोथ दोनों एस्टिमेट ही आर आपको दे देता है. बट आपको सिर्फ अगर रैंडम चाहिए, यू शुड राइट कॉमन इज इक्वल टू फॉल्स. कॉमन मीन्स फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल और कॉमन इफेक्ट मॉडल, यू हैव टू राइट फॉल्स. अगर आपको रैंडम नहीं चाहिए तो रैंडम इक्वल्स टू फॉल्स लिखना है. सो दिस इज व्हाट द डेटा फ्रेम, एंड you don't have to remember it. The moment you type in metaprop, it automatically gives you what all you have to write. तो सिंपल है, मतलब एकदम पहला कि हाँ डेटा फ्रेम का क्या क्या आर को चाहिए. एक तो द बेसिक प्री रिक्विजिट, द नंबर ऑफ इवेंट्स, देन द सैम्पल साइज, देन आर विल आस्क यू कि भाई कहाँ से स्टडी नाम कहाँ से मिलेगा मुझे. तो आपको बताना पड़ेगा भाई यहाँ से मिलेगा, वेरिएबल जो है स्टडी वहाँ से मिलेगा. फिर आर विल आस्क यू हाउ आर यू गिविंग मी द प्रोपोर्शंस, शुड आई टेक इट रॉ प्रोपोर्शन और शुड आई हैव सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो आप बोलोगे नहीं यार ट्रांसफॉर्म कर ले, तो तू PAS लगा लो वहाँ पे. अगर ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, इफ यू थिंक कि दिस इज नॉट दैट सेंसिटिव, so you can use praw raw, p raw, that is proportion raw. So just the command is praw. Here we have used PAS. Then R will ask वो तो ठीक है बट डेटा कहाँ से है. तो तुम बोलोगे कि डेटा इक्वल्स टू द नेम ऑफ द डेटा. देन आर बोलेगा कि मेथड कौन सा यूज करे. यू विल राइट मेथड इक्वल्स टू इनवर्स और GLMM whatever. This one is extra method dot tau, but most probably by default are have some methods. So I'll just check if it is at all required to write or not. Just a minute. Method dot tau is a character string indicating which method is used to estimate the between study variance tau square. And I don't know if there is some by default option. I'll check that. Otherwise, just write it. What is that? Anyway, so now we'll just shift in RStudio and we will write this whole command. I'll just copy paste. Okay. You guys just write the command. You guys write the command. Yes, sir. Yes, sir. Try to write the command by not seeing in the screen. आप करो, मैं तब तक डेटा इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि तब मैं जब ये किया था तो डेटा इंपोर्ट जनरली वंस यू शट डाउन आर, always whenever you start your session you have to import the data again.
Once you complete the whole code, just tell me. You can designate any name. I have designated as prop meta-analysis. You can write anything you want. सर हो गया, लिख दी। अच्छा किया। बाकी Yes, sir. Done. everyone else? Yes, sir. आदर्श, अतुल, महेश सर, अतुल तो है वीडियो। यस सर, हो गया। ओके। अरे मेरा सर वर मत बोलो, रोनिक बोलो। ठीक है, तो अभी एंटर मार दो फिर। अब देखो एंटर मारने के बाद नेक्स्ट कर्सर आया या कोई वार्निंग साइन आया किसी का? Error. ऑब्जेक्ट मेटा नॉट फाउंड। ओके, तो देन यू Sir, हैव टू लोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से लोड नहीं किया होगा, बीच में तुम शट डाउन किए होंगे, आर को बंद किया होगा। हाँ, लाइब्रेरी sir, मेटा फिर हम्म। error आया, unexpected symbol in meta-analysis prop. हाँ, तो उसका मतलब है तुम्हारा राइटिंग में कोई ना कोई घपला है। वो मैं देखता हूँ पहले। ये जिनका लाइब्रेरी लोड नहीं है वो लाइब्रेरी लोड कर लो। सर फिर से। हाँ, जब भी तुम आर बंद करोगे, वंस यू ओपन इट अगेन यू हैव टू लोड द लाइब्रेरी। तुम कमांड में क्या लिखे, मेटा प्रॉप लिखे हो या मेटा लिखे हो? Meta prop. हाँ, ओके। फिर मेटा नॉट फाउंड क्यों बोल रहा है? पता डेजिग्नेट क्या किया था? नामकरण क्या किया था उनका? Sir, नहीं। meta-analysis. ओके, तो देन उसके बाद स्पेस दिया था। हाँ स्पेस है। उसके बाद हाँ, एक लेस देन साइन। हाँ हाँ, देन sir. देन हाइफन विदाउट स्पेस। Yes, विदाउट। without space. हाँ, लेस देन साइन और हाइफन के बीच में स्पेस नहीं चाहिए। हाँ नहीं। ठीक है, सर, फिर फिर क्या? से ये कमांड फिर से लिखना पड़ेगा। हाँ, और स्क्रिप्ट में अगर लिखते तो नहीं लिखना पड़ता, बट यहाँ पे लिखे हो तो फिर से लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखो फिर से, बाद में आर स्क्रिप्ट में प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे अभी लिखोगे तो बेटर है ना। रन करके देखोगे, ये सेम एरर है। मैं ओके। पूरा पढ़ रहा हूँ, ठीक है? पहले डेजिग्नेट करो, कोई भी नाम दो, एबीसी, स्पेस डालो, देन लेस देन साइन विदाउट स्पेस हाइफन, देन स्पेस डालना है, मेटा प्रॉप, ब्रैकेट, विदाउट स्पेस ब्रैकेट रहेगा, वो ऑटोमेटिकली भी आ जाता है, विदाउट स्पेस स्मॉल एन, कॉमा, स्पेस डालना है, कैपिटल एन, स्पेस डालना, कॉमा, स्पेस डालना है, स्टड लैब, STUDLAB। वो लिखते लिखते वो प्रॉम्प्ट आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली इक्वल साइन आ जाएगा। उसके बाद स्टडी लिखना है, स्टडी का एस कैपिटल है, ये खुद को लिखना है, तो स्टडी का एस कैपिटल है, बाकी सब छोटा है। देन कॉमा, देन SM इक्वल टू, विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, PAS, कॉमा देना है, स्पेस देना है, डेटा इज इक्वल टू। जब भी तुम डे टू डे लिखना लिखना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट आ जाएगा, तो उसको क्लिक कर देना है, कॉमा, मेथड इज इक्वल्स टू इनवर्स, सेम वैसे ही। ये पूरा प्रॉपर एकदम देख के करो। कॉमन का भी कॉमन स्पेस दे के इक्वल्स, उसके बाद फॉल्स इन कैपिटल, या फिर सिर्फ एफ लिख सकते हो, पूरा फॉल्स भी नहीं लिखना है। यू कैन जस्ट राइट एफ। और जिन जिन किसी का हुआ है इसमें, एनीवन गॉट इट राइट? डिड एनीवन गेट इट राइट? और किसी का कुछ और प्रॉब्लम आ रहा था, वो क्या बोल रहे थे?
सर वही कमांड में प्रॉब्लम था वो मैं ओके, देखो जब भी तुम ये कुछ भी डाल के मेटाप्रॉप, मैं भी लिख रहा हूँ, चलो मेटाप्रॉप स्मॉल एन कॉमा कैपिटल एन कॉमा स्टड लैब आ गया, वहां पे इंटर मार दो, आ गया कैपिटल STUDY कॉम कॉमा SM इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा PAS अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब लिखोगे तो होने के बाद उसका एंड में आके फिर कॉमा देना है, तो ये छोटा छोटा ये हो जाता है, फिर हम प्रॉब्लम होगा। फिर राइट डेटा is automatically it will come, enter, then you start just writing your data name, day, it will automatically come, see the data has come, so just click it then comma method, automatically it will come, method, click it, the method is inverse, within I is capital then method tau, then p scale, f capital, लास्ट में जो कॉमन इज इक्वल टू f है, that is capital. So this is what you have to write. Did anyone complete? कोई किया, कंप्लीट किया कोई? क्या हो गया? सर हो रहा है, कर रही हूँ। ठीक है, तुम लोग करो, 2 मिनट में आता हूँ, करते रहो, करके कंप्लीट करके बताना फिर। अगर किसी का प्रॉब्लम हो रहा है, विल डू वन थिंग, एक एक करके स्क्रीन शेयर करना, हम लोग उसमें देख लेंगे, अभी कर लो प्रॉपरली।
हेलो। हेलो सर। I think sir got disconnected. हाँ हो गया। Oh, okay. सर कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कमेंट देने के बाद हम्म। असर ही आ रहा है खाली। अच्छा कोई बात नहीं, तो कमेंट लिखो फिर। किसी का हुआ? एक मिनट रुक जाओ, किसी का हुआ और किसी का? एक काम करो, छोड़ो। रुक जाओ। अभी कौन बात किया? हाँ सर, मधुस्मिता। हाँ तो तुम तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो। मैं स्टॉप करता हूँ शेयर करना। प्लीज शेयर योर स्क्रीन। मधुष्मिता प्लीज शेयर योर स्क्रीन। सर मैं कर रही हूँ। ओके। कोई और अगर करना चाहता है वो भी कर सकता है। ओके तो आर को फुल स्क्रीन कर लो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। ओके। हाँ हो गया तो तुम्हारा। अब तुम यहाँ पे लिखो समरी। SUMMARY समरी। कर्सर आ गया मतलब हो गया। और एक चीज है, देखो ऊपर का जो राइट क्वाड्रेंट है जहाँ पे एनवायरनमेंट है, वहाँ पे मेटा एनालिसिस आ गया है। राइट अपर क्वाड्रेंट। नीचे नीचे आओ। हाँ ये ऑलरेडी हो गया है तुम्हारा। जो भी हो समरी लिखो, मेटा मतलब जो नामकरण किया था उसको लिखो। बेटा। हाँ आ गया वो देखो नीचे वाला। हाँ अभी इसको एंटर मारो। आ गया, ऊपर जाओ। मतलब नीचे, हाँ। उतना ऊपर भी नहीं, बीच में थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। तो अरे नीचे। और थोड़ा नीचे, हाँ यहाँ पे रैंडम इफेक्ट मॉडल का एस्टिमेट है 22.45। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी पब्लिश्ड। आवर्स वाज 23 because we did not provided arcsine transform proportion. We did not know at that time, but reviewer also did not say anything. It got published anyway. So anyway, this is your pooled proportion. Just do one thing, Madhushmita, right? You copy the code, copy the last code, that meta-analysis thing. Copy it. यस हाँ सर। अभी नीचे, हाँ नीचे आके पेस्ट करो। स्क्रिप्ट में नहीं, नीचे करो, खुद से करो ना, लिखो खुद से। समरी काट दो अभी। हाँ यहाँ पे PAS के जगह पे PRAW कर दो। SM जो है ना, समरी मेजर। समरी मेजर बीच में स्टार्ट लैब के पास में। अरे कार्सर लेके भी तो वहां पे जा सकते थे। सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है वैसे ही जाओ, लेफ्ट में जाते रहो। हाँ। मोबाइल से लॉगिन करो इसमें और लैपटॉप में काम करो, बेहतर है। हाँ सर, स्टार्ट लैब में जाके। उस स्टार्ट लैब नहीं, समरी मेजर में PAS लिखा है ना। हाँ। हाँ PAS को रॉ प्रोपोर्शन कर दो, PRAW। हाँ अभी इसको एंटर मारो फिर से। समरी, समरी मेटा एनालिसिस। वो नहीं, वो पिछला वाला समरी लोड कर देगा। अभी तुम नया समरी फिर से डेजिग्नेट कर रहे हो। समरी।
मेटा एनालिसिस जो नामकरण किया अभी, सॉरी, हाँ आ गया, एंटर मारो। अब देखो कितना आया, देखो 23.96। ठीक है, अभी और कौन, अभी इस स्टेप तक तुम्हारा हुआ, अभी तुम शेयर करना बंद कर दो। कोई और कोई और जिसका हुआ है या नहीं हुआ है, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। दीपा, महेश सर, समीक्षा, एनीवन? महेश सर, हेलो। समीक्षा और कोई भी यार कर दो, या फिर हम लोग प्रोसीड करें फॉर द नेक्स्ट थिंग, क्या करें? Yes, आई sir. थिंक रौनक आई थिंक रौनक प्रोसीड करो, बिकॉज जो ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, मे बी डिस्कस कर सकते हैं बाद में, बिकॉज अभी सबका ये होगा ना। और Like, कोई और जिसका प्रॉब्लम हो रहा है, कोई और एटलीस्ट एक जन ही करे, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है ये करने का। हाँ, अरे कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम जब मैं कोड कर रहा था, मेरा 1 हफ्ता लगा था कोड ठीक होने में। तो अभी तुम लोग आधा घंटे में कर रहे हो, तो इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव इरेटिक थिंग्स। सो कुछ भी, जिसका भी, महेश सर आप कर दो स्क्रीन शेयर, कोई बात नहीं। कोई एक कर दो, कोई एक और एक कर दो जिसका प्रॉब्लम हो रहा है। मधुस्मिता का तो हो गया था ऑलरेडी। कोई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? पता नहीं, वही। डॉक्टर दीपा कर रहे हैं, उनका थोड़ा नेटवर्क इशू है। अभी शेयर स्क्रीन शेयर करने वाली थी। ठीक है, नो इश्यूज। मे बी ठीक है, हम एक लोग, बार वो हाँ। करके ना 2 फाइल्स शेयर कर सकते हैं। हाँ, वही ठीक वही है। वही। हाँ। ठीक है, आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो लेट्स रीड द आउटकम। तो जब भी आप सामरी, मतलब जैसे मैं बोला था, यू हैव टू डेजिग्नेट अ नेम योर एनालिसिस इज, सो हियर माय एनालिसिस इज डेजिग्नेटेड, माय प्रोपोर्शनल एनालिसिस इज डेजिग्नेटेड एज प्रॉप। तो ये हो गया, ये कर दिया मतलब। तो R has its environment, it has saved the analysis. See here in the right upper quadrant, it has come as prop meta-analysis and prop both also. I had two names, so anyway. So you can click here also. It will give what all it has. So you don't have to see all these things. So what you actually want is this left portion, console. So first it will list all the study names and their events and their 95% confidence interval. And see, it has scaled the proportions into hundreds, that is in percentage values. Then you come down, it has given you the random weights designated. So see, one study by Kahar has got the least weight. It has got this least sample size, I remember, it's 4.1. Then it is saying number of studies. So it has 21 studies. So K equal to 21. Number of observation O is equals to 17,855. That is the cumulative number of the all sample sizes. Number of event is 3589. That is the cumulative number of all events. Then under random effect model, as we have used
arcsine transform proportion. Based on that, it is saying it is 22.45% with the confidence interval this. Then it is saying quantifying heterogeneity. So first is tau square value, then is tau value, then is your I square value, then is H value. So basically right now, just remember I square value. It's 98.9%, and it hasn't given you Q value. So there is a code where you can instruct RI1. No, it has given Q. Test of heterogeneity. Q value is 1743. So I told you already that Q value, when there is no heterogeneity at all, Q value would be is equal to K minus 1. That is the number of study minus 1. So if it is anything beyond that, that means there is heterogeneity. So obviously it is much beyond that. K minus 1 here is 20. So anything beyond 100 or something would be moderate heterogeneity. So it is around 1743. So highly heterogeneous study. Degree of freedom is K minus 1, that is 20. And it is significantly heterogeneous also. Then it has detailed that what has it used. Number one, it has used the inverse variance method. Then for tau square, it has used REML. Then for confidence interval, it has used Q profile method, and then what transformation it used, everything. Anyway, leave it. So this is your meta-analysis done. The proportional meta-analysis you just completed. Now what you need to do is plot a forest plot, right? So just come down. Acha, no. So let me first show you, then subgroup. If you have subgroup, how to do subgroup meta-analysis. So this code was about the overall meta-analysis. It did not give you any subgroups. Now you want to do some kind of stratification, maybe in zone. So it will do something like this. So let me copy the code. Again, I'll show it into Word file. Okay. So for subgroup meta-analysis, everything would be same. Just the details of subgroup you have to supply. So see, first it has started with N, capital N, start lab, summary measure, data, then method tau, p scale. Then you simply have to write subgroup. I want to do a subgroup. So subgroup you write, then equals to which subgroup do you want. So you have to first give the data frame name, and you have to put a $sign. The moment you put a $sign, whatever subgroup you have, whatever categorical variable you have in your data frame, it will be listed out. So from that list, I have selected year-based subgroup. But that's all. That's all extra. This is just one extra command you have to put for doing a subgroup meta-analysis. Okay, so let's do that in RStudio. We'll come back to RStudio now. So let me rewrite it from this subgroup. SUB. See, it has already come subgroup. Then you start writing your data frame name. It has come, so I'll just put enter. Then as soon as you put a $sign, see, it has given you this list of variables you have. So from this, any variable you want to do a subgroup analysis, you can choose. Suppose I want to do from study zone. So I'll just click on study zone. That's all. Then then last is common equal to false. You may not also give it. If you want both the estimates, then also fine. But that's all. Then you have to put enter. The thing is already done. Then same thing, summary. Write the name. It already came, prop meta-analysis subgroup. Then put enter again. Now see, it has given you estimates across subgroup. So first same, it has given you the study names. Then weightage. Then number of study and everything. Test of heterogeneity, and then last result of the subgroup.
So see, study zone, south zone, it is saying 28%, 28% pooled effect. From the west zone, it is saying 4 studies are from west zone, 15%. From north zone, it is saying just 2 studies are there, 10%. From central zone, there are just 3 studies, 18%. Similarly, it has given the confidence interval also for each respective zone. Similarly, it has given the tau square also, I square also. Then it has given the taste for subgroup difference. Now, what does it tell? What did I say? Taste for subgroup difference. Here it is p-value is 0.14. So what does that mean? Anyone? Anyone remember if the subgroup difference p-value is, if it is not significant, what does that mean? Anyone? So subgroup difference p-value, if it is not significant, that means itself the variable on based on which you are doing the subgroup analysis, it is not affecting the overall estimate. Simple. If it would have been significant, that means कि हाँ ये जो geographic variability है based on the geographic variability, the proportion changes, and I'm quite confident about that, and the result is significant, that you can say. But here, as the p-value is not significant, you can say though there are variability within each zone, but maybe due to a non-uniform distribution of studies in each group, the subgroup analysis was not significant. Because see, South Zone has got the maximum amount of studies. Around 11 studies were from South Zone, but rest of the other zones had so many less studies, so less studies. So that's why subgroup analysis did not come well. If it would have been a good representation from each representative zone, तब हो सकता है कि सब ग्रुप एनालिसिस प्रॉपर हो जाता, क्योंकि ऑब्वियसली based on locality, based on many other variables, economic variability, proportion तो change होता ही है. So till this everyone has completed. तो थोड़ा स्क्रिप्ट दिखाइए. स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ बाकी सेम है. बीच में कहीं पे या एंड में, जहाँ पे मर्जी वहां पे सिर्फ सब ग्रुप लिखना है, फिर डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, डॉलर साइन देना है, ऑटोमेटिकली वो पॉपअप आ जाएगा. उसमें से तुम्हारा जो सब ग्रुप तुमको करना है वो सिलेक्ट करना है, बस. एंड इट डजंट हैव टू बी इन दिस प्लेस, मतलब कहीं पे भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट सेंसिटिव. तो तुम लास्ट में भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो. किसी का हो गया?
सर एक एरर आ रहा है। स्क्रीन शेयर कर दो। मैं स्टॉप कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर दो। अरे तुम तो सब ग्रुप डेजिग्नेट ही नहीं किया है। एरर तो आएगा। तुम उसको कॉपी करो फिर से। कॉपी करने का जरूरत नहीं है, काम करो, कर्सर में है ना, वहां पे तुम आप अपर एरो प्रेस करो। हाँ, तो अभी तुम सब ग्रुप में जाओ। उसको काटो, डे टू डेटा फ्रेम को काटो। या जरूरत नहीं है, डे टू डेटा फ्रेम का एंड में कर्सर लाओ। हाँ, ई को काटो, सिर्फ एक बैक स्पेस मारो। पूरा पूरा उड़ा दो। बस बस उतना नहीं, हाँ, सब ग्रुप स्पेस इज इक्वल टू, लिखो डेटा फ्रेम। अच्छा, तुम्हारा उसमें डेटा फ्रेम में प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है क्या? लिखो डे टू डेटा फ्रेम। हाँ, सब ग्रुप। हम्म। अभी डॉलर साइन दो, डॉलर, यूएस डॉलर। हाँ, अभी स्टडी जोन या कुछ भी ईआर कर लो, ईआर। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। अभी इंटर मारो, राइट में आके। अभी समरी प्रॉप सब ग्रुप। आ गया। ठीक है, कोई और? थैंक यू सर। महेश सर आपका? सर अभी नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली ना, तो स्टक समवेयर एल्स। ओके ओके सॉरी ओके। अभी। जी जी सर, कोई जी बात, कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है, तो हम लोग अभी फॉरेस्ट प्लॉट में चले जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, कर रहा हूँ। ओके, तो अभी मेटा एनालिसिस तो हो गया, अब तुमको फॉरेस्ट प्लॉट बनाना है। सो फॉर दैट again you need to write some codes. तो पहले हम लोग विदाउट सब ग्रुप का फॉरेस्ट प्लॉट बनाएंगे, उसके बाद विद सब ग्रुप। दिस कोड इज अ लिटिल लॉन्ग, बट ये ज्यादातर whenever you start putting in the code it will give you prompts, तो ये भी कुछ याद करने वाला है नहीं। सो दिस इज द होल कोड। ओके, तो कुछ बेसिक चीजें मैं बताता हूँ इस कोड का। तो द कोड इज कॉल्ड फॉरेस्ट। तो पहले इस कोड का नाम था फॉरेस्ट डॉट मेटा। तो अभी न्यूअर वर्जन्स में इट हैज चेंज टू फॉरेस्ट। सो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद द कोड। देन तुमको बोलना है कि कौन सा एनालिसिस को लेके मुझे प्लॉट बनाना है। तो दैट इज वो जो नामकरण किए थे वो नाम यहाँ पे पुट इन करना है। सो यहाँ पे मान लो प्रॉप प्रॉप मेटा एनालिसिस किया हो, कुछ भी जो भी नाम दिया हो उसको यहाँ पे लिख दो। उसके बाद पी स्केल 100 यहाँ पे फिर से जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम एनालिसिस के टाइम पे पी स्केल 100 कर चुके थे। अगर नहीं किए होंगे तो यहाँ पे पी स्केल 100 कर देना। देन ये पूछ रहा है कि
वो तो ठीक है, बट प्लॉट का लेफ्ट वाला जो कॉलम होगा वो सबसे लेफ्ट में जो कॉलम रहेगा उसमें क्या लिखूं? तो तुमको बताना है कि अरे यार लेफ्ट कॉलम में स्टड लैब लिखोगे, मतलब स्टडी डिटेल्स लिखोगे और इफेक्ट साइज लिखोगे। तो वही वहां पे लिख दो सी। सी मतलब है लेफ्ट कॉल्स इज इक्वल टू सी इन ब्रैकेट स्टड लैब एंड इफेक्ट। इसका मतलब ये है, तुम आर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि भाई कंबाइन बोथ द वेरिएबल्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लॉट। तो इसीलिए तुम सी लिख रहे हो। अगर तुमको सिर्फ एक चीज रखना है तो इसको सिर्फ तुम ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से कट काट दो सी, यहाँ से इफेक्ट काट दो। मान लो तुमको सिर्फ स्टड लैब ही रखना है और कुछ नहीं रखना है, तो सिंपल लेफ्ट कॉलम इक्वल टू स्टड लैब लिख सकते हो। बट क्योंकि तुमको मोर देन वन वेरिएबल रखना है, तो तुम सिंपली यहाँ पे लिखो कि बेटा कंबाइन कर दो। So C for combine, C in bracket, stud lab, comma, effect, comma, A, comma, B, comma, C, whatever that can be. Similarly, next में वो पूछेगा राइट कॉलम में क्या रखना है। सेम वही राइट कॉलम में तुम बोलोगे कि राइट कॉलम में कॉन्फिडेंस इंटरवल और वेट डॉट रैंडम, दीज आर सेंसिटिव, लाइक R has these data stored in its analysis like एग्जैक्टली सेम। सो तुमको रैंडम इफेक्ट चाहिए वेटेज, तो डब्ल्यू डॉट रैंडम लिखना है। सी आई आर, आर कॉन्फिडेंस इंटरवल को सी आई बोल के ही उसको पहचानता है, तो तुमको सी आई ही लिखना है। तो सी आई कॉमा डब्ल्यू डॉट रैंडम। अगर तुम ये फिक्स्ड इफेक्ट कर रहे होते तो डब्ल्यू डॉट फिक्स्ड लिखते, सॉरी डब्ल्यू डॉट कॉमन लिखते, यहाँ पे आर फिक्स्ड को कॉमन बोलता है। तो ये हो गया। अभी वो पूछेगा कि अच्छा ठीक है कॉलम तो समझ गया, बट कॉलम का तो कोई तो लेवल चाहिए तुम्हें अलग, या जो है वही मेरा मर्जी में लिख दूं? तो तुम बोलोगे नहीं मर्जी का क्यों लिखोगे, वहाँ पे ऑथर का नाम और पब्लिकेशन ये रहेगा। तो सिंपल यू कैन राइट वॉट एवर यू वांट। सो मैंने लिखा है फर्स्ट ऑथर एंड पब्लिकेशन ईयर, और यहाँ पे जो स्लैश एन दिख रहा है ना, इसका मतलब है गो टू द नेक्स्ट लाइन। मतलब फर्स्ट ऑथर एंड एक लाइन में होगा, इन द नेक्स्ट लाइन पब्लिकेशन ईयर लिखा जाएगा। सो दैट इज डेजिग्नेटेड बाय स्लैश एन। तो लेफ्ट कॉलम में तुम बताए थे स्टड लैब चाहिए और इफेक्ट चाहिए, तो स्टड लैब के लिए लेबल हो गया फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन ईयर, और इफेक्ट का क्या होगा, इफेक्ट का होगा प्रोपोर्शन। तो मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल मेटा एनालिसिस लिख दिया। यहाँ पे जो मर्जी है लिख सकते हो, अगर तुम स्टंटिंग निकाल रहे हो तो स्टंटिंग लिखोगे, किडनी डिजीज निकाल रहे हो तो किडनी डिजीज लिखोगे। ऐसा जो भी तुम निकाल रहे हो प्रिवेलेंस जिसका भी है, एचपीवी प्रिवेलेंस निकाल निकाल रहे हो तो एचपीवी प्रिवेलेंस लिखोगे। तो सेम सेम गोज फॉर राइट लैब्स ऑल्सो। यहाँ पे 95% सीआई लिख सकते हो, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लिख सकते हो, जो मर्जी है। वेट में वेट लिख सकते हो, वेट फॉर रैंडम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और ये जो भी है यहाँ पे, दीज आर लाइक ब्यूटिफिकेशन ऑफ द प्लॉट। तो ये जस्ट डॉट स्टड लैब को बोल रहा है कि इसको लेफ्ट में ही रखना, लेफ्ट ओरिएंटेड रखना, जो हम लोग वर्ड में करते हैं कि जस्टिफिकेशन जो करते हैं, लेफ्ट जस्टिफिकेशन, सेंट्रल जस्टिफिकेशन, राइट जस्टिफिकेशन, तो वो वाला चीज है ये। देन ये फिर से बोल रहा है कि पूरा प्लॉट का जो राइट अप होगा वो सेंट्रल ही रहेगा या लेफ्ट में ऐसे रहेगा, ऐसा। तो ये सारा वो है, जस्ट इज इक्वल्स टू सेंटर। देन ये बोल रहा है जस्ट ऐड कॉलम्स इन सेंटर। एसएम लैब, एसएम लैब इज इक्वल टू, मैंने समरी मेजर का कोई लेवल चाहिए या नहीं, तो मुझे मैं बोला कि नहीं चाहिए अलग से। तो एसएम लैब इज इक्वल्स टू जस्ट टू इन्वर्टेड कॉमर्स, तो इसमें कुछ लिखा हुआ है नहीं, मतलब वहां पे एक ब्लैंक स्पेस आएगा। तो ये कुछ भी याद करने का कोई जरूरत नहीं है, ये तुमको कोड हर जगह मिल जाएगा। आजकल तुम चैट जीपीटी में भी लिखोगे तो भी ये कोड मिल जाएगा। तो हाँ, और जो तुम कर सकते हो कि यहाँ से जब, ओके लेट्स डू इट। तो ये जस्ट कॉपी करते हैं, लेट्स डू इट इन आर स्टूडियो। ये कोड तुम लोगों के पास नहीं होगा तो मैं इसको जूम चैट में दे देता हूँ, तो इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। जस्ट अ मिनट। तो जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड एंड चेंज द, वो नामकरण जो था पहला वाला उसको चेंज कर लेना बस। आई हैव सेंट यू थ्रू चैट। तो यहाँ पे मेरा नामकरण क्या था,
कुछ तो किया था। विदाउट, हाँ, प्रॉप किया था। तो वो वाला नाम मैं यहाँ पे बैठा दूंगा। बस बाकी मैं सेम रख रहा हूँ। ये सब जो राइटअप है मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। वो तुम लोग को अभी करना है करना, या तो बाद में करना, अभी जस्ट देखने के लिए। हाँ, ये सब जो कलर्स वगैरह है, ये कोई भी कलर डाल सकते हो। जितना तुमको मर्जी पसंद हो वो कलर लिख सकते हो। एंड इट विल ऑटोमेटिकली, इफ इट रिकॉग्नाइजेस द कलर, इट विल ऑटोमेटिकली टर्न दैट कलर। और एक चीज जो कर सकते हो यहाँ पे आप लोग, अच्छा वो चीज मैं भूल गया, छोड़ो। तो चलो इसको एंटर मार देते। अच्छा हाँ, सॉरी, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे सब ग्रुप था नहीं, बट ये सब ग्रुप का कोड है। तो ये सब हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, तो वो उड़ा भी दे सकते हो, बेटर है। तो ये प्रिंट सब ग्रुप लेवल्स, ये सब से मैं उड़ा देता हूँ। और कहाँ पे है सब ग्रुप? अच्छा, यहाँ पे भी है। कोड में देखो तो कहीं पे सब ग्रुप दिख रहा है लिखा हुआ? नहीं सर। कॉल, ओ अच्छा, हाँ, यहाँ पे ये कॉल डॉट बाई मतलब है कि सब ग्रुप को कैसे कलर करना है, तो उसको भी हटाना है। हाँ, ओके, डन। तो ये हमारा प्लॉट आ जाएगा। पहले कर लो, ये वाला कर लो। मैं ये वाला कोड शेयर कर देता हूँ जूम में, चैट में। सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करो। फिर इसका जो नामकरण है उसका चेंज कर दो, करके एंटर मारो। अच्छा, और एक चीज, अगर एनालिसिस में जब मेटा प्रॉप कमांड यूज कर रहे थे, वो उसमें अगर एनालिसिस में प्रेडिक्शन इंटरवल भी चाहिए, तो एंड में जस्ट कॉमा देके लिख देना प्रेडिक्शन इज इक्वल टू ट्रू। जस्ट टी लिख देना, तो वो प्रेडिक्शन इंटरवल भी दे देगा। प्रेटी सिंपल, जस्ट प्रेडिक्शन इज इक्वल टू टी। ये हो गया तो बोलना। हाँ सर हो गया। हाँ, हो हो गया। गया। ठीक है, ओके, तो आ गया ना, कर्सर आ गया ना? हाँ हाँ। ओके, तो एक बार देख लो, ऊपर राइट हैंड साइड में टॉप में डेलिस तो है, ठीक है, ठीक है। बीच में यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्लॉट आ गया ना? हाँ सर। ठीक है, तो अभी इसको एक्सपोर्ट करना है। तो
यहाँ पे क्या है ना, ये आर वगैरह ये बड़ा स्क्रीन के लिए बना हुआ है, तो रेजोल्यूशन के ऊपर इसका स्क्रीन में कितना दिखाएगा वो डिपेंड करता है। तो इसको तुमको पूरा फुल स्क्रीन देखना है तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, देन सेव एज इमेज। उसके बाद अपना डायरेक्टरी को चेंज कर लो, जहाँ पे तुम ये करना सेव करना चाहते हो। मान लो मैं डेस्कटॉप में से सेव करना चाहता हूँ, तो ये तुम सिलेक्ट कर लो। उसके बाद फाइल नेम जो मर्जी है दे दो, और इमेज फॉर्मेट टीफी रखना, बहुत सारा है बट टीफी इज ऑलवेज हैज ग्रेटर क्वालिटी। अब yes, तुम्हें इसको यहाँ पे जो ट्रायंगल आ रहा है हाँ तो इसको खींचो, विड्थ में खींचो। वो चला गया क्या? कोई बात नहीं, एक काम करो, विड्थ जो है ऊपर लिखा हुआ है 608 लिखा हुआ है, हाँ, उसको 800 कर दो, एंड हाइट को अराउंड 900 कर दो। फिर ये yes, sir. व्यू व्यू प्लॉट आफ्टर सेविंग जो है इसको चेक कर दो, अगर अनचेक होगा तो चेक कर दो, फिर सेव। गिव इट सम टाइम। हाँ आ गया। बट इसका विड्थ कट गया, तो विड्थ बढ़ाना है। तुम्हारा भी कट गया वहां पे कट विड्थ गया। में। हाँ, हाँ, तो विड्थ को बढ़ाना है, तो उसको फिर से एक्सपोर्ट में जाओ, सेव एज इमेज। ये थोड़ा मतलब वो कर करके देखना पड़ेगा, क्योंकि विड्थ किसका याद नहीं रहता कितना विड्थ रखना है, और वो प्लॉट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हाइट वाज परफेक्ट, वो विड्थ यहाँ पे हम लोग 1100 कर देते, और हाइट को हम लोग 1900 ही जो था वही कर देते, और सेव करते हैं फिर। ओके, सो नाउ इट इज डन। यस सर। देखो आ गया। हाँ जी। हाँ, हाँ सर। ओके चलो ठीक है। तो यहाँ पे नीचे एकदम एकदम एंड का जो लाइन है, दैट इज हेटेरोजेनिटी, इट्स ऑल रिटन देयर। द डायमंड वन इज द पूल्ड एस्टिमेट with its confidence interval। ऊपर देखो वो जो लिखे थे तुम, वो सब आ गया। हाँ सर। तो वहां पे वो जस्ट कॉल बोल के लेफ्ट लिखा हुआ था, मतलब ये लेफ्ट सेंटर्ड है। तो ये देखो, वर्ड में हम लोग करते हैं ना, बीच में करते हैं, कभी कभी लेफ्ट सेंटर्ड करते हैं, कभी राइट सेंटर करते हैं, तो इट इज दैट ओनली। फिर सेकेंड वाला कॉलम सेंट्रली जस्टिफाइड है, तो वही है। और ये वाला जो प्लॉट है ये, मतलब ये एकदम मैं खुद जो कोड यूज करता हूँ वही तुम लोगों को दे दिया। तो दीज ऑल ब्यूटिफिकेशंस, कलर्स एंड एवरीथिंग, दिस इज अ काइंड ऑफ चेंज। डन। तो बेसिक प्लॉट ऐसा नहीं दिखता है, बेसिक प्लॉट बहुत ही भद्दा दिखता है। तो तुम अपना हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो। और मैं जो बोल रहा था मेटा फॉरेस्ट को भी अगर हेल्प में जाके क्लिक करोगे, फॉरेस्ट का पूरा आ जाएगा कि क्या क्या ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है। तो यू कैन चूज ईच ऑप्शंस एंड प्ले अराउंड टू मेक इट मोर गुड लुकिंग। लाइक यहाँ पे फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तुमको और कुछ चाहिए, तो हम लोग लेफ्ट कॉलम में सिर्फ स्टड लैब और प्रोपोर्शंस को रखना चाहते थे, इसलिए ये दो ही आया है। और कुछ रखना चाहते हो तो उसको भी इंस्ट्रक्ट करो कि मुझे ये भी चाहिए। या फिर ये प्लॉट जो है इसको तुम एकदम एंड में चाहते हो, तो वो सब हो सकता है। तो उसमें राइट कॉलम में कुछ नहीं रखना है, सारा सारा चीज को लेफ्ट कॉलम में रखना है। राइट कॉलम वहां पे लिखना ही नहीं है, राइट कॉलम इज इक्वल टू फॉल्स कर देना है, एफ कर देना है। तो ये सब जस्ट प्ले अराउंड, दिस इज वन कोड। तो इसके ऊपर तुम अपना काम कर सकते हो कोई भी। अभी सेम चीज हम लोग सब ग्रुप के लिए करेंगे। तो सब ग्रुप के लिए ऑलरेडी शायद पहले ही जो था वो सब ग्रुप के लिए था, तो लेट्स कॉपी दैट। ये पहला वाला जो मैं शेयर किया जूम पे, दैट वन। तो इसको सब, इसमें जो नामकरण करना है वो सब ग्रुप के टाइम करने के टाइम पे जो नाम दिया था उसको यहाँ पे पुट कर देना। मैं क्या दिया था पता नहीं। हाँ, प्रॉप मटेरियल सब, ठीक है। और लास्ट का जो ये कॉल डॉट बाई है, इसको कॉल डॉट सब ग्रुप कर देना।
ये कॉल डॉट बाई पिछला वर्जन में था, अभी नया वर्जन में इसका कोड चेंज हो गया है। ऑलरेडी शायद कॉल डॉट सब ग्रुप दिया भी है यहाँ पे। एनीवे नो इश्यूज, इसको हटा भी सकते हो। हाँ इतना तक हो गया देखो। सो कॉल डॉट सब ग्रुप मतलब है कि सब ग्रुप को कलर करना है ब्लैक में, नहीं तो वो क्या करता है, ये अगर नहीं लिखते हो तो सब ग्रुप को वैसा फेड कर देता है, कलर्स उसका फेडेड कलर दे देता है। बट यहाँ पे ऑलरेडी कोल्ड, और हाँ ये रहा, ये ऑलरेडी अवेलेबल है ये कोड, इसलिए वो बोल रहा था ऑलरेडी लिख चुके हो, क्यों फिर से लिख रहे हो। हो गया। तो इसको भी एक्सपोर्ट कर लो वैसे ही। इसका विड्थ और हाइट ज्यादा रखना क्योंकि इसमें सब ग्रुप है, तो थोड़ा हाइट इसका ज्यादा रख के पड़ेगा। इसका विड्थ 1100 रख देते, हाइट 1100 ही, हाइट भी 1100 कर देते। देन सेव इट। सो दिस हाइट और भी बढ़ाना पड़ेगा, और नीचे कट गया, नीचे ऊपर सब कट गया। तो विड्थ 1100 और हाइट में भी 1300 कर देते। हाँ आ गया, आ गया। 400। हाँ सर आ गए। बस ठीक है, हो गया। सब ग्रुप का भी हो गया फॉरेस्ट प्लॉट। तो इसमें देखो, ऊपर देखोगे तो साउथ जोन का दिया हुआ है रैंडम एस्टिमेट 28%। फिर तुम आओ, वेस्ट जोन का भी अलग से दिया हुआ है, नॉर्थ जोन का भी दिया है, सेंट्रल का भी है, ईस्ट जोन में सिर्फ एक ही स्टडी था दिया हुआ है उसको। अच्छा हाँ, अब प्रेडिक्शन का बोल रहा था। एक काम करो, ये कर्सर में अपर एरो प्रेस करो, करके उसमें जाओ, करते करते रहो, फिर जब तक वो एनालिसिस आएगा, प्रोपोर्शनल सब ग्रुप का जो एनालिसिस का कोड आएगा वहां तक रोको। फिर कॉमन एफ के बाद में कॉमा देके यहाँ पे बैठाओ प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन इज इक्वल्स टू ट्रू। इतना तक हुआ। तुम अगर ऑलरेडी काम कर रहे थे तो कर्सर में जो एरो आएगा, वो अपर एरो तुम अगर क्लिक करते जाओगे तो प्रीवियस कोड्स विल कम। सर ट्रू आया। क्या? हाँ तो इसको एंटर कर दो, फिर से अपर एरो करो, फिर वो फॉरेस्ट प्लॉट में जाओ। हाँ सर। हाँ इसको अभी ओके कर दो, मतलब एंटर कर दो। अभी इसको फिर एक्सपोर्ट करो। विड्थ 1100 और हाइट अराउंड 1300 रखते हैं। देखो नीचे एक प्रेडिक्शन इंटरवल आया होगा। यस सर। तो ये प्रेडिक्शन इंटरवल देखो कितना, 0.61 से 62 तक आया है। सो दिस इज नॉट आवर कॉन्फिडेंस इंटरवल, दिस इज प्रेडिक्शन इंटरवल। दैट मीन्स अगर फ्यूचर में कोई स्टडी हो तो उसका भी जो एस्टिमेट इसी के अंदर आएगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू गिव प्रेडिक्शन इंटरवल एंड एक्सप्लेन इट व्हाट इट मीन्स। नेट में सर्च करना प्रेडिक्शन इंटरवल क्या है, यस सर। उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो you can add these also. यस So सर। it is, so see, this is much simpler. Once you learn it, it is much simpler than any of the other softwares, even Stata or whatever. My Art Studio, first of all, it has endless things to do. Just मतलब थोड़ा एक महीना अपना बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर लेना है। जैसे अभी मेरा कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता है, तो आई हैव ऑल द कोड्स रेडी, तो एक बार कर लिया बस हो गया। और उसको थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहो बीच बीच में, बस और कुछ नहीं। यस सर। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट, थोड़ा अभी थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया।
तो पूरा मैं बाकी तो डू फाइल भेज दूंगा, वहां से करते रहना ये। तो अभी बाकी है हम लोग का फनल प्लॉट। तो फनल प्लॉट तो बहुत इजी है, क्या करना है, सिंपली लिखना है, एकदम बेसिक फनल प्लॉट मैं सिखा रहा हूँ। बाकी फनल प्लॉट का ब्यूटिफिकेशन खुद कर लेना, उसमें हेल्प में जाके वहाँ बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा, प्ले विथ इट। तो अभी फनल लिखना है, लिखने के बाद विदाउट सब ग्रुप जो किए थे वो वाला यहाँ पे डालना है। बस एंटर मार दो, फनल प्लॉट आ गया। ये देखो वो छोटा है तो इसलिए ये पूरा आ गया प्रॉपर्ली। जूम करो इसको। अच्छा फाइल आ गया। तो सिंपली इसका कोड है फनल इन ब्रैकेट द नामकरण यू हैड डन। Yes. सो एक्चुअली नामकरण को वेक्टर बोलते हैं, सो दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो जो प्रोपोर्शनल मेटा एनालिसिस सब ग्रुप ये जो नाम वगैरह दे रहे हैं हम लोग, सो दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो यू आर असाइनिंग वेक्टर टू योर एनालिसिस, तो उससे अच्छा नामकरण ही है। अभी और क्या है, फनल प्लॉट हो गया। अच्छा हाँ, अभी पब्लिकेशन बायस का टेस्ट। तो पब्लिकेशन बायस का टेस्ट जो है ये भी बहुत सिंपल है, याद भी नहीं रखना पड़ेगा। बायस टेस्ट करना है मेटा एनालिसिस का, तो नाम दे दिया मेटा बायस। तो सिंपल लिखो मेटा बायस। भी तुम जो नामकरण किए थे विदाउट सब ग्रुप वाला वो डालो। उसके बाद कौन सा इक्वेशन तुमको यूज करना है वो इसको बोलना है। वो क्या लिखना है, द क्वेश्चन इज व्हाट मेथड शुड आई यूज टू डिटेक्ट पब्लिकेशन बायस। कोड है मेथड डॉट बायस। सिंपल, मेथड डॉट बायस इज इक्वल टू, अब इक्वेशन का नाम से ही ये कोड बना दिया। तो ये सिंपल लिखना है, मुझे एगर्स चाहिए, तो लिखो एगर बस। हो गया तुम्हारा काम। अरे क्या हो गया, हाँ हो गया, चलो। देखो यहाँ पे जो तो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज द एगर्स पी वैल्यू। तो यहाँ पे एगर्स पी वैल्यू है 0.1855। तो एकर्स तो बोल रहा है इसमें सब्लिकेशन बायस नहीं है। सो दिस इज वन प्रॉब्लम विद प्रोपोर्शनल मेटा एनालिसिस। जो कल दिखाया था, जो बिग्स मजुमदार टेस्ट है, उसमें किंतु दिखा रहा था कि इसमें पब्लिकेशन बायस है। तो चलो बिग्स मजुमदार करके देखते। बट बिग्स के लिए क्या लिखना है वो मैं भूल गया, शायद बिग्स ही लिखना होगा, लेट्स फाइंड आउट। तो सिंपल तुम क्या करोगे, बोला था यहाँ पे हेल्प में जाओगे, जस्ट राइट मेटा बायस। ये आ गया, क्लिक इट। अभी नीचे आके तुम्हें देखना पड़ेगा कि हाँ मेथड बायस, तो मेथड बायस में जाओ। हाँ, सो इफ आर्गुमेंट मेथड बायस इज बिग, हाँ सो जस्ट बिग लिखना है। बिग का इक्वेशन करना है तो लिखना भी बिग ही है बस। तो इसमें इगर के जगह सिर्फ बिग लिख दो, BE आ गया। तो इसमें भी पी वैल्यू 0.78 आ रहा है। तो ये भी किंतु बोल रहा है कि पब्लिकेशन बायस है नहीं। but it depends on three things. Number one, your visualization. Visually अगर तुम देखोगे तो there are some bias in it, because कुछ extreme studies है यहाँ पे। तो तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो तुम्हारा विजुअली देख लिया, दूसरा तुम्हारा इक्वेशन से देख लिया। तो इक्वेशंस आर सेइंग देयर इज नो पब्लिकेशन बायस, बट स्टिल तुम्हें अगर लग रहा है बाय सीइंग द प्लॉट कि देयर कैन बी सम स्मॉल स्टडी इफेक्ट्स, क्योंकि ये सिमेट्रिकल तो है नहीं किसी भी एंगल से, तो देन यू कैन आइदर एक्सप्लेन इट इन नैरेटिव वे, और यू कैन डू सम एनालिसिस लाइक ट्रिम एंड फिल। मैं जो बोल रहा था, ट्रिम एंड फिल यहाँ पे मैं दिखाऊंगा नहीं अभी, तो ज्यादा हो जाएगा। अभी के लिए इतना बहुत है क्योंकि कोई करता भी नहीं है, दिस मच इज एनफ। अच्छा लास्ट है तुम्हारा मेटा रिग्रेशन। सो मेटा रिग्रेशन मतलब मान लो जो स्टडी जोन है, कोई एक चीज जो तुम्हारा सिग्निफिकेंट आया हुआ, कोई एक सबग्रुप का एनालिसिस अगर सिग्निफिकेंट आ जाए, हम लोग देख लेते हैं कोई सिग्निफिकेंट आया था कि नहीं, ईयर बेस्ड। सपोज मान लो जो जोन बेस्ड था वो सिग्निफिकेंट आया, तो कोई भी अगर सिग्निफिकेंट आता है तो दैट यू कैन गो फॉर अ मेटा रिग्रेशन।
तो मेटा रिग्रेशन का भी कोड सिंपल है। तो मेटा रिग्रेशन करना है, कोड का नाम है मेटारेज। लिखो मेटारेज, देन विदाउट सब ग्रुप जो किए थे वो वाला यहाँ पे लिखना है, क्योंकि मेटा रिग्रेशन विल वर्क ऑन द क्यूमुलेटिव एनालिसिस नॉट ऑन द सब ग्रुप वन। क्योंकि सब ग्रुप के ऊपर करोगे तो वो इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर भी मेटा रिग्रेशन कर देगा, एंड इट वोंट वर्क। फिर उसके बाद उसको डेटा फ्रेम देना है, सिलेक्ट द डेटा फ्रेम। देन उसके बाद उसको बोलना है कि कौन सा, उसके बाद उसको बोलना है कि कौन सा डेटा, मतलब कौन सा वेरिएबल के ऊपर सब ग्रुप चाहिए मुझे। तो डॉलर साइन मारो डेटा फ्रेम के बाद। तो सपोज हमें ईयर के ऊपर चाहिए मान लो, बस हो गया, एंटर मार दो। ये हो गया तुम्हारा सब ग्रुप एनालिसिस मेटा रिग्रेशन के रिजल्ट। See here test of moderators, that is the p value, that moderator test of moderator p value is whether your meta regression is significant or not. तो ये significant नहीं है, मतलब यही है कि based on when the studies are published there is no effect of that on the proportions. फिर और दूसरा चीज मैं जो देखने बोला था, that was R square, that is amount of heterogeneity that is explained through this meta regression, ये जीरो है। मतलब publication year could not explain any heterogeneity in this analysis। तो यही है इसका सब ग्रुप का मेन फंडा। और जब मेटा रिग्रेशन कैसे रिपोर्ट करते हैं वो तो है, बट वो तो और वो छोड़ो, देख लेना मेटा रिग्रेशन टेबल का एपीए रिपोर्टिंग मिल जाएगा। ये सारा एस्टिमेट्स वगैरह रिपोर्ट करना पड़ता है, तो वो देख लेना। बस दैट्स ऑल, इतना तक हो गया किसी का? यस सर। ओके। बस यही है। तो और कोई कर पाया था मधुष्मिता छोड़ के, और कोई? मधुष्मिता को छोड़कर और किसी का हुआ था? अरे यार गजब है। जो भी हो ठीक है, तो मैं ये डू फाइल भेज दूंगा। तो ये जो स्क्रिप्ट है, द होल थिंग आई विल सेंड, यू गाइस जस्ट वर्क ऑन द सेम डेटा शीट, डेटा फ्रेम। अगर फिर से कभी थोड़ा सा छोटा छोटा करके चाहिए ये हेल्प, तो हम मुझे मेल कर देना। मेरा मेल मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, मेल और नंबर दोनों ही मैं दे दे रहा हूँ जूम में। अभिनव, तो रैप अप करते हैं अभिनव। मिलिंडा, आर यू देयर? Yes, हाँ sir. हाँ रॉनिक मैं हूँ रॉनिक मैं भी हूँ मिलिंडा इज आल्सो देयर सो थैंक यू सो मच इट वाज टू मच टू डू विद इन 2 days but thank you you extended it and today also you give a lot of time but last time also I was saying it is disheartening to see so few people attending the session and I was just thinking should we even give them certificates or not so because then it's like you are paying for the certificate and you're not taking the knowledge that is also not good so anyhow we'll discuss this later but thank you so much Ronik thank you for joining us अरे and कोई बात नहीं। you have already told everyone that you will be helping them even if they need it later हाँ so श्योर look श्योर। forward to that as well बट मुझे वही and पता ही नहीं चला, ये तो मधुष्मिता का चलो मस्त हो गया। मधुष्मिता, हैव यू हाँ डन आर्ट वही बिफोर और पहली बार है? नहीं ये मैं सर, वही बोलने मैंने वाला वो था कि apart from Madhusmita, I think Mahesh sir is also here. So महेश maybe सर if ऑल्सो इज he डूइंग, बट wants ही to गॉट share बिजी, सो something, सो एनीवे uh, डेटा शीट है। Mahesh, do you want to share something? How was your experience with this?
Sir. कोई नहीं, महेश सर का शायद नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम रैप अप करते हैं, लेट हो गया। हाँ चलो। तो हाँ, थैंक यू सो मच रोनिक, एंड देन विल मीट अगेन, फाइन। हाँ एकदम। थैंक यू, बाय। Thank you so much, ओके sir. बाय। Go to you.